Good morning, all of you. In today's lecture, we will going to discuss about a very important topic related with the units because we always have the requirement of units in all kind of numericals in chemistry or the physics or in the mathematics. We always have the requirement of either the CGS unit or the SI unit. The unit may be the fundamental basic units, that may be the derived units. There are different scientific notations also about regarding these units. So in today's lecture, we are going to discuss about all these. So let's start today's lecture. So first of all, we will want to know about a unit. What is a unit? A unit is a standard just to measure the different type of things, whether we are measuring the weight or the volume or the length, anything, we have the requirement of something standard. So that standard which is used for the purpose of measurement is called a unit. For example, for the measurement of the weight, we have the requirement of unit, and that unit which is used for the measurement of the weight is either the gram or the kilogram. So these gram or the kilogram are the units of the weight. Now, what are the fundamental units or the basic units? Similarly, what are the derived units? So the independent units which cannot be derived from any other units are called basic units, which are the direct units, which are not derived from any other units. So these are the fundamental units, or you can say the basic units, and these are mass, length, and the time. So the units regarding these three terms, mass, length, and the time, so the units related to the mass, length, or the time, these are the fundamental units or the basic units. And the units which are derived by using these fundamental or the basic units are called as the derived units. For example, what is the unit of area? We know the formula of area, that is the length into breadth. And on the basis of the fundamental unit, we know what is the unit of length. The unit of length is meter in SI or the centimeter in CGS unit. If we take the SI unit, then what is the unit of area? Length multiplied by breadth means unit of length is in meter and the unit of breadth is also in meter. So the unit comes out to be meter square. Means that unit, that is the meter square, that is derived by using the units of length and breadth, and finally we got the unit of area. Now the unit of area is meter square. How that meter square comes out? That meter square unit of area comes out by using the basic units, that is the unit of length. So the unit of area, that is the meter square, is a derived unit. Teacher can ask you in your exam to tell whether meter square is a derived unit or the fundamental unit. For example, velocity. Velocity, what is the velocity? The distance by time is the velocity. The distance traveled by any of the thing per unit time is called velocity. Here we have the two terms. One is the distance. Distance means the length, that is the basic unit, divided by time, that is also the basic unit. So the ratio of these two basic unit result in a formation of the new unit, that is the derived unit. So what is the unit of distance? That is in meter. And what is the unit of time? That is in second. So the unit of velocity is meter per second. But according to the SI system, internationally system, there are 7 basic units, and these are generally, out of these 7 basic unit, the question generally been asked in your different examination, like in NEET examination. NEET examination के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है. Mass, the unit of mass is in kilogram, representation is kg, the unit of the length is in meter,
the representation with small m. The unit of time is in second, the representation with small s. The unit of the temperature is in Kelvin, representation by capital K. The unit of amount of the substance is in mole, represented by MOL. The unit of the electricity is ampere, represented by capital A. The last one, the luminous intensity. The unit of the luminous intensity is candela, represented by CD. So these are the 7 basic units according to the system internationally. Now, there are some common things which we must always to learn. These are the basic thing. Deci, 10 raised to the power minus 1. Centi, 10 raised to the power minus 2. Milli, 10 raised to the power minus 3. Micro, 10 raised to the power minus 6. Nano means 10 raised to the power minus 9. Pico, 10 raised to the power minus 12. For example, sometimes we say there is a picometer. How can we write in meter? Just multiplied by 10 raised to the power minus 12. 1 picometer is equal to 10 raised to the power minus 12 meter. So that we are going to learn here. Femto, 10 raised to the power minus 15. Atto, 10 raised to the power minus 18. Next one is the deca, 10 raised to the power of 1. Hecto, 10 raised to the power 2. Kilo, 10 raised to the power 3. Mega, 10 raised to the power 6. Giga, 10 raised to the power 9. Tera, 10 raised to the power 12. Peta, 10 raised to the power 15. Exa, 10 raised to the power 18. And that is the very basic thing, that is the King Harry died, mother didn't cry much. इसको ध्यान रखते हुए आपने जब आप लोअर क्लासेस में थे तो आपने ये चीज अक्सर याद की होगी कि किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक थिंग. किंग मीन्स किलोमीटर, हैरी का एच तो हेक्टोमीटर, DIED डाइड का डी यूज किया तो डेका, मदर का एम यूज किया तो मीटर, डिडंट का डेसी, क्राई मीन्स सेंटीमीटर, मच का एम यूज किया तो मिलीमीटर. मीन्स इन सभी के बीच 10 10 10 10 10 10 का गैप है. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं, यू वेल नो, व्हेन वी कन्वर्ट द मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो 10 गैप 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देखो 10 अगेन 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अगेन 10, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 ml. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 ml. फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर, आप जानते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000. देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर. अगेन 10, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 डेकामीटर. 1 kilometer is equal to again 10, 10 multiplied by 10 multiplied by 10, 1000. So 1 kilometer is equal to 1000 meter. So in that way, by using that very simple trick, you can easily convert one unit into another. That is very important also according to your numerical. Numerical के अंदर हमें यूनिट कन्वर्जन की नीड होती है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद करेंगे. Now we have a very simple question. Pressure is determined as force per unit area of the surface, that is given. The SI unit of the pressure, Pascal, is as shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. The mass of the air at the sea level is 1034 gram per centimeter square. Calculate the pressure in Pascal. Pressure की जो definition है वो क्या है? Pressure is defined as the force acting per unit area of the surface. That is called as pressure. That is called as pressure. So pressure is equal to force upon area.
and force is equal to mass into acceleration. G here is acceleration due to gravity divided by area. Now mass is the basic unit, G acceleration को फर्दर आप कन्वर्ट करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या है, फिक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Mass is given here 1034 gram per centimeter square divided by area per unit area 1 meter square. After putting all these values, what we find out, just what we are doing here, just see here. As we can see here, there is a difference of unit. What it means? It means in case of the mass is given, you can see here in gram, you can see here that is a gram per centimeter square. But here the acceleration due to gravity in meter per second square. So the unit must be same whether we are adding the two things. If we are adding the two things, we can only add two things if they have the same unit. For example, if we are adding 1 rupee in 1 paisa, means you cannot add 1 plus 1 is that is the 2, because 1 rupees, unit of 1, that here is the rupees. 1 paisa, the unit is 1 paisa. So when you are adding two things, the unit of both of them must be same, either both of them in rupees or both of them in paisa. Similarly, if you are multiplying something, the unit must always be same, either the centimeter or all in meter. All in CGS unit means centimeter, gram, second, or MKS unit, mass, kilometer, second. So that is the necessary thing that must always be kept in mind during all the numericals. So that is the reason here, what we have done here, 1034 gram, we have to convert that gram into kilogram. What we will do, अभी आपको एक ट्रिक सिखाई थी, उसके बेसिस के ऊपर आप जानते भी हैं वैसे कि 1 kg is equal to 1000 gram. So what we will do to convert that gram into kilogram, just divide it. तो हमने सिर्फ क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और जो ग्राम था that been converted here into the kg. Next one here is centimeter square. Centimeter square means that centimeter is at the bottom here, that is the centimeter square. In that way you can write it in that way. And 1 meter is equal to 1 centimeter. So when you convert the centimeter into meter, what you will do, you will divide it by 100, because in 1 meter there will be below 10 centimeter. So because that is the centimeter square, you will divide it by 100. देखो 100 से हमने divide किया, सेंटीमीटर नीचे है और डिवाइड करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, देखो 100 आ गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर भी किया. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जब इसको कन्वर्ट किया इस चीज को इसमें, तो हमने 1000 से डिवाइड क्यों किया, फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू केजी, कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू केजी, किलोग्राम, और फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू द मीटर स्क्वायर हमने क्या किया, सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड किया, और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, देखो नीचे था, तो नीचे जब डिवाइड किया तो कहां पे आ गया वो, ऊपर, और स्क्वायर हमें करना ही पड़ा. सो दैट इज द वे. After calculating all these things, what we find out, 1.01332 multiplied by 10 raised to the power 5 kilogram per meter square second square. तो इस टाइप से आपको ये कैलकुलेट करनी चीजें आनी चाहिए, इसलिए यूनिट कन्वर्जन जरूरी है. And that also be equal to Newton per meter square. Now the next question, match the following
प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। अभी आपको पीछे हमने ये सिखाया था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, डेका का मतलब क्या है, मेगा का मतलब क्या है, गीगा का मतलब क्या है, फेम्टो का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आपको बता दी थी। तो उसके बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है, इनको मैच करना है। तो ये आप बड़ी आराम से इनको मैच कर सकते हैं। अभी आपको हमने बताया था, मैच करें शाबाश जल्दी से आप सभी। तो बताएं आप जल्दी से, व्हाट मीन्स बाय माइक्रो, जल्दी बताएं माइक्रो का मतलब। अभी बताया था आपको, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। डेका, जल्दी बताएं, 10⁻1। मेगा, 10⁻6। गीगा, 10⁻9। फेम्टो, 10⁻⁻15। Now the next one, express the following in scientific notation। जल्दी से बताएं। Now the first one, 0.0048, you can write it in the following way, 4.8 multiplied by 10⁻⁻3। क्योंकि जब आपने डेसिमल को हटाया तो डेसिमल की जगह 1 और 1 2 3 4 जीरो आ गई आपके पास। आउट ऑफ दीज 4 जीरो आपने यूज किया, 1 तो 48 के साथ, तो 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। नेक्स्ट वन, 2 3 4 0 0। आपने क्या किया, आपने इस पूरी की पूरी जो 2 3 4 0 0 है, आपने इस कंप्लीट को क्या किया है, 1 2 3 4 और 5 से आपने डिवाइड किया, और इतने से ही आपने 1 2 3 4 5 से आपने मल्टीप्लाई किया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल होके यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो क्या बन गया, 2.34 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 के रेज टू द पावर कितना है बेटा यहाँ पे, दैट इज द 10⁻5। ओके, तो इस टाइप से दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट वन, 80008। इसी टाइप से आपने इसमें क्या किया, जो 80008 है, 8008, इसको आपने 1000 से डिवाइड किया और 1000 से ही मल्टीप्लाई किया, तो नो चेंज। 1000 से जो डिवाइड किया तो डेसिमल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो 8.008 मल्टीप्लाइड बाय 1000 को कैसे लिखेंगे, 10⁻3। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट वन, देखो 500 है, मल्टीप्लाइड बाय आपने इसको 100 से किया, ये डेसिमल 500.0 था, और 100 से ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से ही डिवाइड किया, तो जो आपने नीचे डिवाइड किया तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 5.000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², 6.0012, that will remain the same. Now the next one, fill in the blanks in the following conversion। जल्दी से बताएं। अभी पीछे फार्मूला बताया था आपको, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर। तो बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश 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 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश 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 पिकोमीटर। बताएं आंसर क्या आएगा।
देखो दैट इज द आंसर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर। ये आंसर आया कैसे? हमने आपको पहले भी वो ट्रिक बता दी थी। देखो फिर से आपके सामने लिखते हैं हम। देखो ये सारी चीजें अभी हमने आपको बताई थी। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? वेयर इज मिलीमीटर? यू कैन सी किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किलोमीटर से हेक्टो 10, फिर डेका फिर 10, फिर 10, फिर डेसी 10, सेंटीमीटर 10, मिलीमीटर 10, हाउ मेनी 10? 10 मल्टीप्लाइड बाय 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 10 means 10⁶. So that's why we have written here 1 kilometer is equal to 10 raised to the power 6 मिलीमीटर। और अदरवाइज आप जानते ही हैं, जो डायरेक्ट आप वैसे याद करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर को पहले आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप वैसे याद करना चाहें तो? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में, आप जानते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द टोटल सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मल्टीप्लाइड बाय आपने 10 कर दिया, तो ये मिलीमीटर आ गए। देखो ऐसे, तो सेंटीमीटर भी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दे, 3 + 2 + 1, तो 10⁶। सो दैट इज आवर आंसर। अब हमें कन्वर्ट करना है आगे इसको पिकोमीटर में। पिकोमीटर। अब क्या करें? देखो आपने ये याद किया है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने देखो याद भी करवाया था पीको। देखो ये रहा पीको। 1 जो पिकोमीटर होता है, 1 पिकोमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻12 मीटर। राइट। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? रिवर्स चल रहे हैं मीटर को। मीटर को सेंटीमीटर में देखो 3 टाइम्स, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे। दैट कम्स आउट टू बी 10⁻⁻⁻15 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो अब किलोमीटर को पिकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करें? तो अभी आपने देख लिया कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 किलोमीटर है। हमें देखना है 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे। तो व्हाट वी विल डू, ये जो 10⁻15 है ये दूसरी साइड में आप ले जाए इधर। तो क्या हो जाएगा दूसरी साइड में जब ये चीज जाएगी? तो बताएं शाबाश। ये इधर डिवाइडेड में आ जाएगी। मीन्स 1/10⁻⁻15 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कि 10⁻15 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। वही हमने लिखा है कि 1 किलोमीटर में हाउ मेनी पिकोमीटर? 10⁻15 पिकोमीटर। दैट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन। सेकंड क्वेश्चन का जवाब बताएं जल्दी से। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच नैनोग्राम? देखो आंसर हम बता देते हैं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁶ किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁶। बताएं बेटा शाबाश, कैसे निकाला आपने? फिर से वही, आपके पास ट्रिक है नीचे, बेसिक जो आप याद करते हैं। जल्दी से देखें, आप नीचे लिख रखा है, उसके बेसिस के ऊपर खुद सोल्व करें। मिलीग्राम आपको कहाँ पे लिखा दिख रहा है? मिलीग्राम को अब की बार आपको केजी में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, केजी से देखो किलो से जब मिली की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय, अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा। तो देखो मिली से सेंटीमीटर, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर, कितनी बार देखो डिवाइडेड बाय 10, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 6 बार क्या करना पड़ेगा? देखो इसको 10⁶ से डिवाइड। तो फिर क्या आ जाएगा? केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया?
ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻⁻6 kg, 10⁻⁻6 kg। तो मिलीग्राम को जब भी आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻6 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया? अब आप आगे नैनो देखें। देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, नैनो का मतलब 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, दैट इज द नैनो। तो जब आप मिलीग्राम को नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻6 आप सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब बताएं आप, शाबाश, देखो आंसर मैंने लिख दिया। As we all know, 1 liter is equal to 1000 ml। तो 1 ml में कितने लीटर होंगे, मीन्स यू विल जस्ट डिवाइड इट with 1000। if you divide the ml by 1000, that will be converted into liter। तो 1000 जब आपके ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁻3। so that is the 10⁻⁻3 liter। and 1 liter is always equal to 1 decimeter cube, both are the same one। तो लीटर की जगह आप डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छे से समझ कर याद करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेसिक यूनिट्स। आपको इनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। बेसिक यूनिट्स मींस पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। अभी हमने देखा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10 की पावर देखो 12 मीटर, ये अभी हमने देखा था। तो आप इजिली इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 28.7 multiplied by 10 raised to the power minus में 12 meter। So that is the answer. Similarly, the next one, 15.15 multiplied by 10 raised to the power minus में 12 meter। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। तो what is the answer? The answer will be the 25.365 gram। So that is the answer. You have to convert the milligram into the gram, but you can also convert it into the kilogram because 1 kg is equal to 1000 gram। तो फर्दर 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। So in that way you can convert it into the basic units। Next question, if the speed of the light is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second, calculate the distance traveled by the light in 2 nanosecond। कैलकुलेटेड, जल्दी से सॉल्व करें। Now on the basis of the definition of the speed or the velocity, you can, we all know the distance traveled, the distance traveled by the light per unit time is called as the speed। तो distance traveled by the light हमें कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस बाय टाइम। देखो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, टी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो इसीलिए द डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेलोसिटी और द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ स्पीड and the time here, but before that convert the nanosecond into the second। We all know the speed of the light given is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second multiplied by time 2 nanosecond means 2 multiplied by 10 raised to the power minus में 9 second। Here we have converted the nanosecond into the second one। 3 multiplied by 2, 3 2 just 6 multiplied by, देखो 10 की पावर -9 है यहाँ पे,
अगर ये यहाँ की बजाय नीचे होगा तो 10⁹, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, नीचे सिर्फ 10 बच जाएगा। तो 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 10, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0.6। और आंसर किस में आएगा आपका? इन मीटर। तो 0.6 मीटर इज द आंसर। So that is all about today's lecture regarding the units. तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें और भी आप सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करें, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके चैप्टर आएंगे आगे, हर चैप्टर के अंदर यूनिट कन्वर्जन आपको आना जरूरी है। सो थैंक यू। दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।